गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। टुडे इज ट्यूसडे। मिस्टर समिंदर सिंह जी, गुड इवनिंग। मिस्टर गोस्वामी सुमित, यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो डियर एस्पिरेंट्स, now let us begin our evening session. So first of all, Mr. Saminder Singh has asked a question regarding जू फार्माकोग्नोजी। जू फार्माकोग्नोजी सबसे बड़ी बात है, ये एक व्यवहार है। व्हाट डज इट मीन? तो जू फार्माकोग्नोजी एक ऐसा व्यवहार है जिसमें गैर मानव जानवर रोगाणुओं, यस परशुराम कुमार जी, आपने भी मैसेज पढ़ लिया होगा समिंदर सिंह जी का व्हाट्सएप में और जो ग्रुप में उन्होंने व्हाट्सएप दिया है, सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर झारखंड। सो जू फार्माकोग्नोजी इज ए बिहेवियर, इट्स ए behavior in which non-human animals self-medicate by selecting and ingesting or topically applying plants, soils, and dear aspirants, okay, dear aspirants, insects with medicinal properties to prevent or reduce the harmful effects of pathogens, toxins, and even other animals. So this is जू फार्माकोग्नोजी। सो इट्स ए बिहेवियर, ये अपने आप में एक व्यवहार है जिसमें नॉन ह्यूमन एनिमल्स सेल्फ मेडिकेट बाय सेलेक्टिंग एंड इंजेस्टिंग और टॉपिकली applying plants, soils, insects with medicinal properties to prevent or reduce the harmful effects of pathogens, toxins, and even other animals. So I hope you have understood. Raina, yes, good evening, very good evening, Mr. Raina. So I hope you have understood. This is the meaning of Jew pharmacognosy. Jew pharmacognosy, and it's a behavior. Okay, it's related to behavior. So dear aspirants, आइए चलें अब प्रश्नों की दुनिया में, जहां पे आपके लिए आज काफी कुछ मैंने संजोया है। गुरु तेग बहादुर built the city of। The first question belongs to history segment. Dear aspirants, परशुराम कुमार जी एक वीडियो शो कर रहा है ग्रुप में। Yes, the question relates to that very video sent by Mr. Shaminder Singh ji. So, for your kind information, we also run a WhatsApp group, Civil Services Academy Devghar Jharkhand, and the contact number of the WhatsApp group is 9934739191. Dear aspirants, this is the WhatsApp number. So you may put your questions, you may send your writings like the essay, okay, or any question answer. You may find the newspaper, that is the Hindu and Economic Times. You may also find the magazines like Kurukshetra Yojana and some important materials related to UPSC exam only. So here comes question number 1. Guru Tegh Bahadur built the city of A. Chandigarh, B. Patiala, C. Anandpur Sahib, and D. None. So Mr. Vicky Singh is not present today, and here comes the first question related to Punjab. So Guru Tegh Bahadur built the city of, and what should be the answer? Okay, if you know the answer, you should write it in chat box. Otherwise, the answer is C. आनंदपुर साहब। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहब नगर को बिल्ट, बनाया, बसाया, आप जो कहें। सो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से आनंदपुर, यस समिंदर सिंह जी, दिस इज थम्स अप फॉर योर करेक्ट आंसर। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हाल ही में समाचारों में देखा गया, और ये साइकेडेलिक्स, PSYCHEDELICS
मैं गया हूं। अच्छा अच्छा, आप आनंदपुर साहब गए हैं, वेरी गुड। सो साइकेडेलिक्स, PSYCHEDELICS. So you have to find out the correct answer. Psychedelics. This was in the news recently, and you have to find out, okay, the relationship. A, polymers. Are they polymers? B, spacecrafts. C, drugs. Or D, none. So what should be the answer to these psychedelics? So psychedelics, okay, psychedelics, C is the correct answer. Yes, here is thumbs up for your correct answer. Drugs. Psychedelics, the spelling is PSYCHEDELICS. Dear aspirants, now you are going great guns, और काफी अच्छे से प्रश्नों पर आपका अभ्यास है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए देखें, कुछ और प्रश्नों पर आपका अभ्यास कराते हैं, और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास, दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू पॉलिटी, PSIR, political science and international relations. Dear aspirants, with reference to pardoning power, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास जो क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त है संविधान के द्वारा, नंबर 1, द पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। इज इट करेक्ट? Dear aspirants, you have to examine it, then you have to find out the correct answer. Second statement, the president has no pardoning powers on sentences inflicted by court martial. So court martial relates to the military court. Dear aspirants, which of the statements given above is are correct? A, 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. शुभ संध्या गुरुजी। यस, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही, बस थोड़ी थकान होती है, तो आराम में वक्त ज्यादा बीत जाता, खासकर दोपहर में। मदद करें। अच्छा अच्छा, तो इसमें मदद यही है कि आप कुछ पौष्टिक पदार्थ का सेवन करें, जैसे बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करें, चावल थोड़ा कम कर दें, रोटी की मात्रा ज्यादा कर दें, और अभी चूंकि गर्मी की शुरुआत है तो सत्तू का सेवन करें, तो बस आपका निदान हो जाएगा, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। और कोई ना कोई, अब जैसे जिकोविट, ये लेना चाहिए, आदमी को जिंक की जरूरत है, तो ये आप ले सकते हैं। विकोसूल ये भी ले सकते हैं विटामिन के लिए, और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को थकाइए ताकि मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। साक्षी इज टेलिंग गुड इवनिंग। यस साक्षी, वेरी गुड इवनिंग। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यस मिस्टर सुमित गोस्वामी, यू आर करेक्ट। 1 ओनली मिस्टर रैना, आपके लिए ये रहा थम्स अप। और हर्षदीप ने कहा धन्यवाद, और मोहम्मद आलम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यू आर हियर विथ मी, सो वेरी गुड इवनिंग। सो डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The power can only be exercised by the president on the advice of union cabinet. ये क्षमादान है। आपके चरणों को सत सत नमन मेरा। अरे ऐसा नहीं, इतना मैं ऐसा नहीं हूं, और बस केवल आप स्नेह बनाए रखें और प्रेम बनाए रखें, बस इसी की जरूरत है। मैं तो एक रिटायर्ड IAS हूं, मेरे पास समय बस इतना ही है कि आप सभी लवासना चले जाएं। आप लोगों की जितनी हमसे अपेक्षाएं हैं वो भगवान हमें शक्ति दे ताकि वो पूरा हो सके। डियर एस्पिरेंट्स, बस इतनी ही इच्छा है, बाकी सब कुछ तो आप जानते ही हैं। तो बस इतना ही, गुरु चरण स्पर्श। अरे बाप रे आलम जी, बस हो गया। आपको हृदय की गहराइयों से शुभकामना है। सो डियर एस्पिरेंट्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, and the second statement, the president has no pardoning power on sentences inflicted by court martial,
This sentence is not correct. Punishment or sentence is for an offense against a union law. Punishment or sentence is by court martial, military court. So, dear aspirants, second statement is not correct. Dear aspirants, the sentence is a sentence of death. The pardoning power of the president is independent of the judiciary. It is an executive power, but the president, while exercising the power, does not sit as a court of appeal. राष्ट्रपति महोदय महोदया का कोई न्यायालय अपलेट कोर्ट नहीं है. The Supreme Court examined the pardoning power of the president under different cases and laid down the following principles. The power is to be exercised by the president on the advice of the union cabinet. So this is the verdict of the apex court, dear aspirants. That's why the first statement is correct. और इसके बाद आइए देखें, which of the following occurred during viceroyship of Lord Ripon. Dear aspirants, modern Indian history and especially the freedom struggle. Okay, this is most important segment as far as the UPSC prelims examination is concerned. So, which of the following occurred during viceroyship of Lord Ripon? So, number one, enactment of first Factory Act. Second, repeal of Vernacular Press Act. Third, appointment of Hunter Commission to suggest education reforms. Fourth, invasion of Afghanistan from British India. And fifth, Ilbert Bill controversy. So Mr. Goswami Sumit is answering 2. So A, 1, 2, 3, and 5. Okay. B, 1 and 4. C, 2, 3, 4, and 5. And D, 1, 2, 3, 4, and 5. So, dear aspirants, okay, we have to exclude invasion of Afghanistan from British India. So, our answer should be A, 1, 2, 3, and 4, 5. 1, 2, 3, and 5. Enactment of First Factory Act, okay, during Lord Ripon, 1880 to 1884. He was a staunch liberal Democrat with faith in self-government. He was appointed as Viceroy of India in 1880. Ripon was instructed to reverse the Afghan policy of litter. As a result, peace was made with Afghanistan without affecting the British prestige. Dear aspirants, so invasion of Afghanistan from British India, this is not correct, and our answer is okay, Vernacular and Hunter Commission Factory Act separate judiciary. Yes. So 1, 2, 3, and 5 only. 1, 2, 3, and 5 only. Dear aspirants, now let us see. A fault is a fracture or zone of fractures between two blocks of rock. Mr. Alam, this question relates to your optional paper, that is geography. Fault, F-A-U-L-T, is a fracture or zone of fractures between two blocks of rock. In this context, dear aspirants, in this context, arrange the following seismic faults from east to west. From east to west. Number 1, Bhima Fault. Number 2, Malda Fault. Number 3, Allah Band Fault. Allah Band Fault. And 4, Chura Chandpur. Okay, Chura Chandpur Mao Fault. So, dear aspirants, select the correct answer using the code given below. A, 3124. B, 4213. C, 1432. And D, 4132. So, dear aspirants, what do you mean by a fault? So, a fault is a fracture, okay, or zone of fractures between two blocks of rock. Faults allow the blocks to move relative to each other. So, dear aspirants, B is the correct answer, 4213.
4213. This is Chura Chandpur Mavo fault, then Malda fault, then Bhima fault, and Allah Band fault. So yes, Mr. Raina, C is the correct answer. And Mr. Goswami is Sumit is telling, don't know sir, कोई बात नहीं है. अगर यही पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे क्वेश्चन होता है तो वहां आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? आई विल गेट इट सर. ओके, और हल्का स्माइल. ओके, आई डोंट नो, ऐसा नहीं बोलना है प्लीज. ओके, सो डियर एस्पिरेंट्स, आइए. यस, योर आंसर इज करेक्ट. सो 4213 is in Manipur, famous now because of cookie. Yes, yes, Mr. Raina, well read. Wonderful. So I was talking about a fault. A fault is a fracture or zone of fractures between two blocks of rocks. Faults allow the blocks to move relative to each other. The Chura Chandpur Mavo fault is named after two places in Manipur and runs north-south into Myanmar along the border of Champhai. Dear aspirants, Malda fault, it is the fracture in the rock observed in Malda district of West Bengal. Bhima fault found in the southern part of river Bhima basin in Maharashtra. And the Allah Band fault, a scrap, is an elongated, steeply dipping south facing scrap bordered on the south by salt encrusted surface of run of Kutch. Run of Kutch. So, dear aspirants, our answer is B, 4213. Our answer is B, 4213. एक बार फिर से लिख लेंगे. Number 1 is Bhima fault. Number 2, Malda fault. Number 3, Allah Band fault. Number 4, Chura Chandpur Mavo fault. And what should be the answer? 4213. 4213. So, dear aspirants, let us move to the next question. And here we have, with reference to the National Investigation Agency, NIA of India, consider the following statements. Number 1, it is a statutory body under the Ministry of Home Affairs. Number 2, it is empowered to investigate and prosecute offences committed within and outside India. Number 3, it can investigate cases related to counterfeit currency and cyber terrorism. Dear aspirants, which of the statements given above are correct? A, 1, 2 only, B, 1 only, C, 2, 3 only, and D, 1, 2, 3 only. So, dear aspirants, this question relates to NIA, National Investigation Agency. National Investigation Agency. Rana is telling C, but the answer is D. 1, 2, 3. All the statements are correct. It is a statutory body. First of all, you should know the difference between constitutional body and a statutory body. Constitutional body is that constitutional body which has got mentioned in the constitution itself. Now, a statutory body, it means that has been formed, that has been created through the parliamentary, operations, that is through by an act. So, a statute. So, that is a statutory body. Dear aspirants, first of all, NIA, National Investigation Agency, is a statutory body under the Ministry of Home Affairs. Now, the second statement, it is empowered to investigate and prosecute offences committed within and outside India. This is very, very important. Okay, you may have a question in prelims examination. So, within and outside India. Now, the third statement, it can investigate cases related to counterfeit currency and cyber terrorism. Now, such type of study,
okay, is required, because while you are going through a topic, you should go through at micro level. What do I mean? Okay, you should try to get into, dive deep into the topic and find out the aim and objective, who are the stakeholders, okay, what is the government position, which ministry, okay, department is related to. डियर एस्पिरेंट्स, अब मिस्टर वीकी सिंह ने कहा था गवर्नमेंट स्कीम लाने के लिए, लेकिन आज तो वो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा उनके उपस्थिति में ही गवर्नमेंट स्कीम पे मैं बात करूंगा. डियर एस्पिरेंट्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी which was constituted under the National Investigation Agency Act of 2008. 2008 in the wake of 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक. तो ये भी जानना काफी जरूरी है. एनआईए इज फंक्शनिंग एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. ट्राई टू कैच माय वर्ड्स. ओके, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी of India, which functions under the Ministry of Home Affairs. So, dear aspirants, all the statements are correct. So, it empowers NIA to investigate and prosecute offenses within India, and okay, NIA Amendment Act 2019 empowered the agency to investigate offenses committed outside India subject to international treaties and domestic laws. अब यहां पे ये कंडीशन है कि अगर उस देश के साथ हमारी संधि है इस बिंदु पर और अपने घरेलू कानून है, तभी वहां पर जाकर के उन दूसरे देशों का भी कानून है, मतलब वही अड़चन नहीं है, देन आफ्टर इट विल बी एक्सरसाइज्ड. सो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे ये सवाल आपने सुना. लेट अस मूव फर्दर, एंड दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, रिसेशन इज contraction in economic activities for at least 2 consecutive quarters. Second, Indian economy entered recession for the first time in its history during 1991 economic crisis. Is it correct? Which of the statement given above is correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. Dear aspirants, this examination has negative marking. Mr. Goswami, Sumit, your answer is correct. Okay, 1 only, 1 only, 1 only. Yes, second statement is not correct because Indian economy entered recession for the first time in its history during 1991. Okay, so while this pace of contraction is considerably slower than 29.9 decline in real gross domestic product during the first quarter, the contraction of quarter 2 was crucial because it implied that India entered a technical recession first half of 2021 for the first time in history. So it is not 1991 but 2021 for the first time in history. 2021, not 91. So on this score, the second statement is not correct. The first statement is correct, dear aspirants. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो इस प्रकार से 1991 was balance of payment crisis. Well read, मिस्टर रैना, और काफी अच्छी तरह से आपने तैयारी किया है और ये इस बात का प्रमाण है. दिस इज अटेस्टेशन. आई एम वेरी मच ग्लैड, आई एम हैप्पी. और आप लोगों के साथ ये जो आंसर आता है तो उसको देखने के बाद काफी खुशी का अनुभव होता है. आई फील माई सेल्फ प्राउड ऑफ यू पीपुल, जो आप इस तरह से आंसर देते हैं और बहुत अच्छी तरह से आंसर देते हैं. तो आइए चले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं.
और ऐसे ही क्वेश्चंस पे अगर आप पकड़ मजबूत करते हैं तो फिर परीक्षा में सफलता बहुत आसान होती है। डियर एस्पिरेंट्स, अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनलाइक ला नीना और अल नीनो, these are the hot cakes as far as UPSC exam is concerned. Consider the following statements. Number one, unlike La Nina, El Nino occurs on a regular schedule. Now you have to examine whether it is correct or not. Second, El Nino occurs more frequently than La Nina. The third statement, the trade winds are strongest during an El Nino. Fourth, the onset of La Nina puts an end to the hurricane season. How many of the statements given above are correct? A, only one. This is the typical style. Okay. A, only one. So since you are not knowing almost all statements, how can you be able to answer? So dear aspirants, you are required to know the details of this topic. Okay. La Nina and El Nino. So A, only one, B, only two. Okay. 3 is wrong. Yes. 4 is also wrong. Okay. 3 is 1, 3 is wrong. Mr. Goswami is telling. So our answer is only one. A is the answer. Only one statement is correct. So first and third and fourth are not correct. Only second statement, El Nino occurs more frequently than La Nina. This is the only statement correct. Dear aspirants, first statement is not correct, third statement is not correct, and fourth statement is not correct. I said only 1, 3 is wrong. Okay. 3 is wrong. Very good. So, ye kya, Mr. Goswami? 1, 3 wrong. Yes, only 1, 3 wrong. Okay. So, 1 is incorrect, 3 is also incorrect, and 4 is also incorrect. So, what was the fourth statement? Yes, the onset of La Nina puts an end to the hurricane season. This is the fourth statement. So La Nina can also lead to a more severe hurricane season. So the onset of La Nina puts an end to. Okay, so this is difference of statement, controversial statement. Puts an end to the hurricane season, but okay, dear aspirants, La Nina can also lead to a more severe hurricane season. So Goswami ji, ऐसा मत कीजिए please. Okay, be happy, don't be emotional. This class is meant for practice only. करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शील पर पड़त निशान। यही उद्देश्य है, आपका अभ्यास हो और आपका अभ्यास ही वहां सफलता दिलाएगा। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दिस क्वेश्चंस? पीडीएफ? ओहो, आई डोंट हैव एनी पीडीएफ। हम पीडीएफ वाले नहीं हैं, हम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज नन ऑफ माय स्टाइल, ये हमारा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं। यस, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। ओके, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। ओके, ये सारे तो क्वेश्चंस बनाना और उसको आपके समक्ष पढ़ना, डियर एस्पिरेंट्स, तो यही है सबसे बड़ी बात। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, और आगे देखते हैं
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। IM न्यू, अरे कोई सॉरी मत कहिए प्लीज, सॉरी, नेवर से सॉरी, सॉरी क्यों कहते हैं? ओके, सो सॉरी नहीं कहें प्लीज। और बस यही, आइए देखें एक स्टेटमेंट ज्योग्राफी से ही, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यू विल फाइंड। ओके, सो स्टेटमेंट वन, a rip tide is a specific type of current associated with the swift movement of tidal water through inlet and the mouths of estuaries. What is the difference between delta and estuary? Okay, the rivers being drained to the Bay of Bengal, वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं डेल्टा बनाती हैं, और वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं एस्टुअरी बनाती हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ये तो आप जानते ही होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ए रीप टाइड इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ करंट एसोसिएटेड विद स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर थ्रू इनलेट्स and the mouth of estuaries. Statement 2, a reap current is a localized current that flows away from the shoreline, shore, towards the ocean at an acute angle to the shoreline. Which one of the following is correct in respect of the above statements? A, both statements are correct, and statement 2 is the correct explanation, okay, for statement 1. B, both are correct, but statement 2 is not correct explanation. C, statement 1 is correct, 2 is not correct, and D, statement 1 incorrect, 2 is not correct. So dear aspirants, if you are knowing the answer, you should write it in chat box. Otherwise, here C is the answer. Statement 1 is correct. Okay, a rip tide is a specific type of current associated with the swift movement of tidal water through inlets and the mouth of estuaries. But the second statement is not correct. The second statement is not correct. So our answer should be C. Our answer should be C. तो आपने देखा, आइए देखें पीएम ऊषा एक स्कीम की बारी आ गई। हालांकि मिस्टर वीकी सिंह आए नहीं फ्रॉम पंजाब। पीएम ऊषा USHA एक स्कीम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम ऊषा, प्रधानमंत्री। नंबर 1, इट कवर्स गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स एंड अर्बन टेरिटोरीज। सेकंड, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is the guiding force in preparing the base for PM USA. Which of the statement given above are not correct? So A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and neither 1 nor 2. We have to find out the incorrect statements, dear aspirants, regarding. So Saminder is telling A is the answer, 1 only, but the answer is D. Both the statements are correct. Both the statements are correct. Okay. The Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan, USA. Okay. Yes. Goswami Sumit ji. Correct answer. So Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan. What is the full form of USA? USHA, Uchchatar Shiksha Abhiyan. It covers government and government aided institutions of the states and UTs. Or as demand for higher education is increasing continuously over the years, there has been an unprecedented expansion in the number of institutions, universities, and volume of students in the country. Dear aspirants, the second statement is also correct because National Education Policy 2020, that is NAP 20, is a guiding force in preparing the base for PM USA. So dear aspirants, इस प्रश्न को भी
आपने समझ लिया। एक मिशन है, उसका नाम है एसपीडेस, ASPIDES। डियर एस्पिरेंट्स, हियर कम्स द क्वेश्चन, which one of the following organizations, sangathan, has recently launched, okay, the mission SPDES, ASPIDES? बस इतना ही बताना है। A, the European Union; B, the European Space Agency; C, the World Economic Forum, WEF; and D, the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA. So what should be the answer? If you are knowing, you should write the answer D. Oh, A is the answer. European. The European Union launched a naval mission to protect Red Sea shipping from Yemen's Houthi rebels, as a US-owned cargo vessel repeatedly came under fire in the region. Dear aspirants, EU is the correct answer. और ये हाल में ही समाचारों में था, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया। आइए एक मेटल पे सवाल करते हैं विथ रेफरेंस टू निकल मेटल। निकल मेटल, मेटल धातु, निकल मेटल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इट बिलोंग्स टू द फेरोमैग्नेटिक elements naturally present in the earth's crust. Second, it is essential for physiological functions of plants such as the germination of seeds. Or third, it can be emitted from volcanoes but is absent in the meteorites. Dear aspirants, how many of the statements given above are correct? A only one, B only two, C all three, and D none. अब तीन स्टेटमेंट में थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एलिमेंट्स निकल में बी प्रेजेंट इन द सॉइल, meteorites and emitted from volcanoes. So our answer should be only two statements. B is the answer. Yes, Raina. B is the answer. Only two statements are correct. Only two statements are correct. So dear aspirants, अब इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं बॉन कन्वेंशन से। बॉन, BONN convention. With reference to the Bonn Convention, consider the following. Number 1, it is an environmental treaty, पर्यावरणीय संधि, formulated by the United Nations. Now you have to examine whether it is correct or not. Second, it is the only global convention specialized in conserving migratory species. 3 is difficult to prove correct, so it is wrong. Third, India became a member of the convention. Specialized in conserving migratory species. India became a member of the convention immediately after its enactment. So, dear aspirants, only one statement is correct, and that statement is second statement is also correct. So, third statement is not correct. Our answer should be B. Our yes, wonderful Mr. Raina, correct. और अब इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों पर हमने आपका अभ्यास कराया जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्व के हैं। अब आइए कुछ ताजा तरीन प्रश्नों की ओर। कांचा गाची बाउली फॉरेस्ट, नाम सुने हैं? कांचा गाची बाउली फॉरेस्ट which was seen in the news, हाल ही में समाचारों में था, is located in which city? A. Bhopal, B. Chennai, C. Bangalore, and D. Hyderabad. So Raina is telling Hyderabad, and it is the correct answer. Correct answer. Correct answer. Current affair related questions 20 to 25 you will find. Which state government has launched the AI Rising Grand Challenge
to resolve the public sector issues? A. Telangana, B. Maharashtra, C. Karnataka, and D. Odisha. So dear aspirants, इस तरह के सवालों पर भी पकड़ होनी चाहिए. So which state government has launched the AI Rising Grand Challenge? So Shaminder Singh ji is telling C. The answer is Telangana. Telangana is the correct answer. Deenbandhu Choturam thermal power plant is located in which state? A. Haryana, B. Punjab, C. Himachal Pradesh, and D. Uttarakhand. So dear aspirants, what should be the answer? Deenbandhu Choturam thermal power project. So it is in Haryana. Haryana. Yes, correct answer. Very good. Now recently, where were the rare fossils of the extinct Stegodon Ganesha found? अमन शर्मा बता रहे हैं. So A. Gujarat, B. Tamil Nadu, C. Maharashtra, and D. Kerala. So dear aspirants, what should be the answer to this important MCQ? So the fossils of the extinct Stegodon Ganesha. Stegodon Ganesha. MH is the correct answer, Mr. Saminderji. Wonderful. Baglihar Dam is constructed on which river? A. Jhelum, B. Chenab, C. Narmada, and D. Godavari. So what should be the answer? Baglihar Dam. तो ये सब जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. सो द आंसर इज चेनाब. द आंसर इज चेनाब. डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह के प्रश्नों पर आपका अभ्यास काफी महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है, यही आपकी सफलता का द्योतक है. और आइए चलें एक दो और प्रश्नों पर. अब एक लोकसभा में छोटे अपराधों में जेल नहीं हो. अब छोटे छोटे अपराधों में जेल हो जाता है. अब सरकार ने एक ऐसा कानून लाया जिसे जन विश्वास, डियर एस्पिरेंट्स, क्या है? जिसे एक जन विश्वास बिल कहा जा रहा है. जन विश्वास बिल कहा जा रहा है. आम लोगों के लिए बड़ी राहत. ओके, जन विश्वास बिल के आने के बाद छोटे मोटे अपराधों में जेल की सजा नहीं होगी. करीब 700 ऐसे छोटे अपराध हैं जिनके लिए जेल हो जाती है. अब जेल हो गई, काफी पूरा का पूरा परिवार दहल जाता है. और किसको जेल होती है? जो कामगार हैं. एक तो जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, बिना टिकट के ट्रेन में चले गए, जेल चले गए. डियर एस्पिरेंट्स, ऐसे 700 कानूनों के लिए जेल को हटाकर जुर्माना की व्यवस्था की गई है. अब इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी छोटी मोटी गलतियां, चक्का जाम जैसी छोटी मोटी गलतियां और ऐसे छोटे मोटे प्रशासनिक उल्लंघन जन विश्वास बिल में आ रहे हैं. तो ये भी एक सूचना देना बहुत जरूरी था. हो सकता है यू मे फाइंड कि इसी को आपने क्वेश्चन में देख लिया. डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों पर विचार किया. कल फिर आएंगे इसी तरह से एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स 10 to 15 क्वेश्चंस पे आपकी मास्टरी कराएंगे. टुमारो साइंस एंड टेक के साथ गवर्नमेंट के स्कीम्स और सी सैट में कुछ क्वेश्चंस कल अवश्य आएंगे. सो बी प्रिपेयर्ड, हैविंग पेन एंड पेपर. डियर एस्पिरेंट्स, लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.